A very warm welcome to everyone. My name is Manish and welcome you all back to the channel The Board Tutor. तो आज का मेरा जो क्वेश्चन है, prove that the sum of later half of two n terms of an AP is equal to the 1/3 of the sum of the first 3n terms. मतलब अगर मेरे पास कोई सीरीज है 2n टर्म्स की, उसका जो लेटर हाफ होगा is to be equal to the 1/3 of the sum of the first 3n terms. अगर कोई सम है मेरे पास, कोई सीरीज है, इसका सम है 3n, S3n इसके 1/3 के बराबर होना चाहिए. ओके, तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. ओके, तो क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. हमसे कहा गया है कि 2n की सीरीज है, एक सीरीज है 2n की जिसका जो लेटर हाफ है, सपोज ये भी n है और ये भी n है, दोनों मिला के 2n बनेंगे. ओके, तो जो लेटर हाफ का सम है वो हमें प्रूव करने किसके बराबर होना चाहिए, 1/3 ऑफ द सीरीज ऑफ 3n. तो अगर मैं ऐसा करूं, अगर मुझे n निकालना है, सपोज इफ आई डू दिस थिंग, अगर मैं S2n में से Sn माइनस कर देता हूं, अगर मैं S2n में से Sn माइनस कर देता हूं और मुझे ये चीज बराबर करनी है किसके, आई हैव टू प्रूव दिस इक्वल विद 1/3 ऑफ S3n. मुझे ये काम करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज S2n? S2n इज इक्वल्स टू 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d. ओके, ये मेरा हो जाएगा 2n. दिस इज 1. नाउ वी व्हाट इफ वी हैव Sn? Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n minus 1d. This is equation number 2. Okay, so first we will solve LHS, taking LHS in consideration. Okay, if I subtract S2n minus Sn, what I'm going to get? 2n/2 2a plus, if I am multiplying inside, 2nd minus d. Okay, minus Sn. Sn is n/2 2a plus n minus 1 means nd minus d. Okay, now I am taking n/2 common from this whole equation. If I am taking n/2 common, then I am going to get 2 2s are 4a plus 4nd minus 2d minus plus is minus. Okay, minus 2a minus plus minus nd minus plus d. Okay, 4a minus 2a is 2a. 4a minus 2a is 2a. 4nd minus nd, it is plus 3nd. Okay, and minus 2d plus d is minus d. Okay, n/2. This is the summation of S. This is the formulation of S2n minus Sn. Okay, this is done. This is the if I say that it is equation number 3. Now what we will do, now we will take S3n. What is going to be S3n? What is going to be the S3n? It is going to be 3n/2 2a plus 3n minus 1d.
Okay, now we have to take 1/3 of S3n. If I take 1/3 of S3n, I will get 1/3 into 3n by 2 2a plus 3nd minus d. 3 से 3 cancel. I will get n by 2 2a plus 3nd minus d. Okay, can I say that this equation is equivalent to this equation? If I say that this is equation 4, so can I say that equation number 3 is equivalent to equation number 4? Okay, so I can say that equation 3 is equivalent to equation 4. So I can say that by this we can prove that we already proved what was asked in the question, that proved that later half of S2n is equal to the 1/3 of the S3n. So I proved it that S2n minus Sn is equal to half of S3n. LHS equals to RHS, hence true. Okay, so I think that you all must have understood this concept, and if you all find anything, like if you face any sort of doubt regarding these questions, you can directly contact me on Instagram. Okay, you will be given the ID in the description box, and if you face any sort of problem, you can contact me on Gmail, or you can directly write the queries in the comment box. Okay, I will definitely help you out. Okay, thank you all for watching. If you did like it, if you did love the video, then please like, share, subscribe the channel. Bye bye.